नहीं तमें पर यूट्यूब रे देखीदेव हेनी मु जहाँ अध घंटा पर माने मो क्लास 9:30 जाए जीव है आगर कही रखुची जो 9:30 जाए जीव सो टिके पर देखीदेव ना हेनी ओके वी गॉट लाइव गुड इवनिंग जय जगन्नाथ वेलकम टू our YouTube class. So in this class, in this video, we will discuss about thermodynamics. हमें thermodynamics already 3टा lecture पढ़ी सारचे and this is the 4th lecture. Sir, every day 8 PM में class होगी? Yes. Okay, we got live. किधर होगा नहीं? और YouTube पे. Okay. So those who have joined from Google Meet, I request that please do not sound unless I say. किछि न पचारला जाए किछि कहिवनी. Okay, please mute yourself. So हम देखते thermodynamics. Thermodynamics रे हमर कोन thermo means heat and dynamics means motion. So thermodynamics is the branch of chemistry which deals with the study of motion of heat and energy accompanying all the physical and chemical processes. Then some basic concepts and terms related to thermodynamics. कौन थिला system surrounding, types of system रे थिला open, closed, isolated. open रे कौन थिला तुम्हारा जोठी both heat and matter exchange हुए. closed रे only heat but not matter. isolated ले neither heat nor matter. एवला थिला structure एवला थिला homogeneous माने single phase, heterogeneous माने different phase. Okay, microscopic, macroscopic माने larger molecule, microscopic माने smaller molecules. State function, path function. State function माने कौन करुची ना जोटा तुम्हारा final और initial ऊपर depend करुची. path function माने only path ऊपर depend करुची. Dependent, independent. Dependent माने तुम्हारा जोटा the variable which depends upon other to be expressed out. अन्य ऊपर जो variable टा depend करुची that is known as dependent variable. और जोटा तुम्हारा अदर ऊपर डिपेंड करूनी दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंटेंसिव, एक्सटेंसिव. इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक कांस्टेंट हीट. साइक्लिक रे इनिशियल स्टेट को आसबो, रिवर्सिबल रे इक्विलिब्रियम रे एराइज हबो, इरिवर्सिबल रे इक्विलिब्रियम रहिबनी. Internal energy is the energy stored in a substance by virtue of its chemical nature. Then it is a state function, so it can be calculated by the energy change. Exothermic by negative, endothermic by positive, cyclic by 0. Enthalpy होची तुम्हारा heat removed or given to a system. So आमे जदि कहिबा H is equal to del U plus del H is equal to del U plus P del V. As H is a state function. For the exothermic by negative, endothermic by positive, cyclic by 0, isocoric by del U. Now enthalpy of a reaction is product minus summation over product minus summation over reactant. For the gas this is your del U plus del N RT. Remember del N is the change in number of moles, that is your difference in number of moles in gas. Okay, next is your question. हमें थिला कि गोटे क्वेश्चन भी करिथिले. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. स्टैंडर्ड ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होची जोटी तुम्हारा स्टैंडर्ड कंडीशन रहइबो, दैट इज 273 टेंपरेचर और 1 बार प्रेशर रहइबो. फेज ट्रांसफॉर्मेशन तीन प्रकार थिला. फ्यूजन रे सॉलिड टा लिक्विड रे कन्वर्ट होबो. वेपोराइजेशन रे लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस, एंड इन सब्लिमेशन गैस विल बी सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस लाइक naphthalene and CO2. Next, enthalpy of formation. If I say enthalpy of formation, generally enthalpy of formation of water is your generally 1 mole substance form हवा पई जहा heat
actually use habo, that is known as enthalpy of formation. Enthalpy of combustion, one mole substance oxygen सहित react करिया पई जहा heat use habo, that is enthalpy of combustion. Okay, so it has up to this enthalpy of combustion. Then after we will discuss the remaining parts. Okay, kahar kon doubt अछि कि still do you have any doubts, you can ask me. Any doubts? एंथैल्पी ऑफ कम्बशन डाउट अछि मा. एंथैल्पी ऑफ कम्बशन देखो, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन रे कोन होची ना, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोस कम्बशन, माने 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कोन होची ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करूची आ तुमारा करेस्पोंडिंग कंपाउंड दोची. 1 मोल सब्सटेंस तुमे 1 मोल कार्बन नहीं पारो, 1 मोल किंतु 1 मोल हेथिबा को पड़िबो, सेही अनुसार तुमारा बाकी बळका टर्मडा अकॉर्डिंगली हबो, बट इट शुड बी इन 1 मोल. कोटा जो सब्सटेंस तुम्हारा कंबशन हम माने जो सब्सटेंस तुम्हारा हीट जीवो. ओके, क्लियर? यस, माने 1 मोल मॉलिक्यूल फॉर्म हम, 1 मोल मॉलिक्यूल फॉर्म हम को जहा रहइबो, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, यस सर. जति हीट दरकार. आउ काहे किसी डाउट्स अछि? डू यू हैव एनी डाउट्स? Next we will discuss bond dissociation enthalpy. Okay, bond dissociation enthalpy. Sir, enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation means generally the substance which get directly converted into gas from solid. जोटा solid ru gas directly होगा, that is known as your enthalpy of sublimation. Not all, सब गुड़ा को नुह. ठीक अच्छे? Okay, sir. Okay. Actually आ मझिरे कहीं आसीबनी प्लीज. मझिरे आसिले बहुत डिस्टर्बेंस रोची, because we are going YouTube live for the students who could not attend the class. जो माने क्लास करि पालेनी से मानक पय हम YouTube live करूचे. Okay, enthalpy Zoom रे क्लास कले जनो पोस्ट कर दिला प्रॉब्लम. बट जूम रे कोन होची ना, जूम रे हमरो किछि पिला रहिचंदी जो माने मोर कांटेक्ट लाइक ओएबी रो पिला से माने पय प्रॉब्लम होबो. ओके, सो जूम रे हम करबानी, हम पढिबा. ठीक अछि, रिकॉर्डिंग पर्पस रे जाउची जेतु विल रीड. So fifth one is enthalpy or bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy. Okay. अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी माने कौन बुझो? बॉन्ड डिसोसिएट हबा माने कौन बुझो? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड डिसोसिएशन? प्रणाम दिशा, प्रणाम गुरुप्रसाद, शुभ्रांशेखर, प्रणाम. व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड डिसोसिएशन? डिसोसिएशन माने कौन बुझो? व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन? एनीवन? जनरली ब्रेक करवा, राइट? ब्रेक करवा. So आमे कहि परिबा the energy required or the enthalpy this is represented as del bond H naught. So this is enthalpy, bond dissociation enthalpy. So we can say that the enthalpy involved during no, it is going on. The enthalpy involved during breakage of a chemical bond.
सर वॉइस कट है आसुचे let me check. Breakage of a chemical bond. Breakage of a chemical bond. So गोटे chemical bond break कला बेले जहाँ energy लगे that is known as your bond dissociation energy. There is no issue actually, किसी भी issue नहीं. If you are unable to, if you are facing any problem, then you can join through YouTube. So bond dissociation enthalpy. For example, जदि आम देखा bond dissociation enthalpy रे गोटे bond suppose आमर रही कौन ना H2 टा भांगी की हाइड्रोजन देला H थिला H टा भांगी H2 टा भांगी गोटे सिंगल दुईटा हाइड्रोजन आटम हला गैस. सो एठी जहा रहिला दैट इज नोन एज del HH तक ए भलिया लिखा जो del HH H naught माने enthalpy of dissociation of H2 molecule. Enthalpy of dissociation of H2 molecule, that is 435 kilojoule mole inverse. 435 kilojoule mole inverse. Okay, so it have 435 kilojoule mole inverse enthalpy of dissociation of H2 molecule. तापर नेक्स्ट आमर आसुची क्लोरीन मॉलिक्यूल. सिमिलरली क्लोरीन मॉलिक्यूल 2Cl gas दबो and again here enthalpy of dissociation of chlorine molecule is how much? It is 242 kilojoule mole inverse. Again next one is oxygen O2. O2 here again converted into 2O gas. This is also, but this is not exactly enthalpy of atomization. It is somehow related to enthalpy of atomization also. O double bond O H naught माने इठी ऑक्सीजन को बॉन्ड ब्रेक करिया को जहाँ एनर्जी दरकार 428 किलोजूल मोल इनवर्स. क्लियर बुझेला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ना कहार डाउट रही एनी डाउट? डू यू हैव एनी यूट्यूब रे जो माने अच्छा बा गूगल मीट रे जो माने अच्छा, डू यू हैव एनी डाउट्स? Okay, we'll move to next sixth number. Sixth number is Sir, yes Google Meet ର voice YouTube live ଶୁଣାଯାଉଛି. YouTube रे Sir, Google Meet ର voice YouTube ରେ ଶୁଣାଯାଉଛି. okay no issue. So try not to tell. ठीक अच्छे एटा चेंज करी होनी आगले. नेक्स्ट लैटिस एंथैल्पी. नेक्स्ट इज योर लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी. लैटिस एंथैल्पी प्राय मु केमिकल बॉन्डिंग रे पढ़ी देछि. लैटिस एनर्जी बा लैटिस एंथैल्पी व्हाट इज दिस? सो लैटिस एनर्जी इज द व्हाट इज एनीवन हु कैन से फ्रॉम गूगल मीट के कहि परिबो? टेल मी अकॉर्डिंगली के कहि परिबो जदी कहो. The amount of enthalpy required, sorry, amount of enthalpy released, the amount of enthalpy or energy released. sir ମୁଁ କହିବି when 1 mole of a
chemical substance, 1 mole of an ionic substance, 1 mole of an ionic substance is formed from the corresponding gaseous atoms, gaseous ions, from the corresponding gaseous ion. So gaseous ion रो हमर जहाँ माने gaseous ion रो generally ion रो gaseous ion रो ये करिवारु जहाँ energy release हबो that is known as your lattice enthalpy. So हमें कोई परिवा lattice enthalpy रो गोटे example like Na plus gas plus Cl minus gas, and this give rise to NaCl solid. And what is the del H here? Del H lattice energy. This is del H lattice is equal to minus 78 kilojoule mole inverse. यार reverse भी जोड़े चाहिए कोई परियो that the amount of energy required to break the bonds of an ionic substance. गोटे ionic substance रो bond को break करिकी further से to gaseous ion convert करिया पे जहाँ energy दरकार that is known as lattice energy. इनती भी जोड़े चाहिए कोई परियो. And lattice energy can be calculated by using Born-Haber cycle. It can be calculated by using Born-Haber cycle. It can be calculated from Born-Haber cycle. Okay. Next, enthalpy of solution. दुईटा थिला enthalpy of solution और enthalpy of dilution. Enthalpy of solution. So we can say that the enthalpy of solution of a substance is defined as when 1 mole of a chemical substance, chemical solid substance, when 1 mole of a chemical solid substance is added with a specified volume of solvent, to make the solution, the enthalpy involved during the reaction is known as enthalpy of solution. Okay, ताको हम कौन कहबा enthalpy of solution. जेतोले हमर 1 mole substance form हबो
1 mole substance যেতବେଳେ ফর্ম হবে that is known as enthalpy of solution ঠিক আছে okay is added with a specified volume of solvent to make the solution the enthalpy involved voice lag होची कि do you find any voice lagging in YouTube also yes sir Yes, sir. YouTube रे भी voice lag होची sir YouTube रे voice lag होने but network error होचे error है रोच मैंने No sir, meet रे voice late আসছে কিন্তু YouTube রে perfect আছে। okay I have to check Sir YouTube ରେ voice ঠিক আছে কিন্তু meet ରେ late ରେ voice ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି। ଆପଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ। अच्छा okay I have to check accordingly देखियो पड़ियो कोड कोन रहला ठीक अछि सो सॉल्यूशन रो सो डिलेट सॉल्यूशन माने तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड दिस इज योर हाइड्रेशन एंथैल्पी this is lattice enthalpy so this is lattice enthalpy is equal to lattice enthalpy by lattice energy and this is del hydration H naught is equal to hydration energy ता कौन कहबा हमें hydration energy माने water add कले जहा energy that is hydration energy okay ताले हमें किसी नेक्स्ट एंथैल्पी लास्ट एंथैल्पी हमर रहइबो लास्ट एंथैल्पी एठी हमर एंथैल्पी पार्ट सरी जिवो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी सरी जिवो 8 नंबर इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन basically I am following NCERT book for this specified topic NCERT as well as KP and your bureau of modern ABC so enthalpy of dilution माने कौन ना when a concentrated solution when a concentrated solution is diluted तो हमें गोटे concentrated solution को dilution करिवा माने add करिवा water add करिवा is diluted by adding excess of solvent एटा किंतु स्पेसिफाइड रहइबनी एटी सॉल्वेंट कोन रहइबो एक्सेस रहइबो किंतु सेठी तुमरा स्पेसिफाइड थिला कोडी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन रे by adding excess of solvent then the enthalpy change is known as enthalpy of dilution ताले हमें एटा कोन कहबा enthalpy of dilution जेतले ए दिन सो कहबा हमें enthalpy of dilution ओके ताले enthalpy of dilution जदि हम देखिबा एग्जांपल जदि देखिबा HCl it depends upon your amount of केते तुमे ऐड करूचो केते ऐड करूचो that depends upon this HCl plus 10 aqueous give rise to HCl 10H2O जोटा कि तुम्हारा dilute solution and here del H is equal to minus 69 kilojoule mole inverse हला एटा जदि मु 10 aqueous कली कि जदि मु
40 आक्वास करी ताले यार वैल्यू केते आसीबो HCl 10H2O sorry 40H2O here del H is equal to minus 72 एटा minus 69 माने एटा into 4 कर देबनी ठीक है minus 72.79 किलोजूल मोल इनवर्स सो एटा एक्सपेरिमेंट रो जाना पड़ियो जे कहार केते रहउछि एटा 40H2O जेतोले हम ऐड करबा ए भले आसीबो क्लियर बुझियला एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन अप टू दिस कार किछि डाउट होछि कि related to these enthalpies no doubts okay so we will move to next part that is your heat capacity next is your heat capacity so it is all our enthalpy part next we will move to next parameter that is heat capacity so it is all about enthalpy part एटी हमारा enthalpy part is over here next we will move towards the heat capacity so give heading heat capacity हमें enthalpy सरला एबे देखिबा heat capacity या रिलेटेड प्रॉब्लम हमें लास्ट को करबा जोठी तुम्हारा धीरे धीरे गोटे गोटे प्रॉब्लम कला आ टिके क्लियर हो जिवो डिटेल्स हीट कैपेसिटी माने कौन हीट कैपेसिटी हम जो देखिबा जनरली हमारा हीट कैपेसिटी इज योर द आमे गोटे जिनस हमरो जेमती हमरो कैपेसिटी जेमती हमें गोटे जणे केतिकी हीट एब्जॉर्ब करि परिबो मैक्सिमम बा जणे केतिकी मैक्सिमम हीट एमिट करि परिबो दैट इज नोन एज हिज कैपेसिटी जेमती हमें कहि परिबा जे तुमको पाठ दिया हला तुम केतिकी क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो बा केतिकी आंसर लिखि परिबो दैट इज नोन एज योर कैपेसिटी ठीक अछि सेडो को हमें कैपेसिटी कहबा सो सिमिलरली हमर हीट कैपेसिटी माने हमर हीट कंटेंट केते कोन कर परिबो धरी की रखी परिबो माने केते हीट कंटेंट तुमरो से एब्जॉर्ब कर परिबो बा ता भितरे इनसाइड तार सिस्टम रे केते हीट रही परिबो एक्चुअली से सिस्टम केते हीट को कोन कर परिबो रखी परिबो दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी सर गोटे डाउट अछि यस को मते टिके आउडे बुक खाली को यस टेल मी व्हाट इज योर डाउट सर लैटिस एंथैल्पी माने तुम्हारा हमें जो देखिबा जे गोटे आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होची फ्रॉम द कॉरेस्पोंडिंग आयोनिक योर these are your from the corresponding gaseous ions from the corresponding gaseous ion हेले ता कोन कहजिवो लैटिस एनर्जी बा तार रिवर्स को भी कहि परिबो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी एडे रिलीज को आइदिला अमाउंट ऑफ एनर्जी एडी होबो बा अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड जेतोले when 1 mole of an ionic substance is formed from the corresponding gaseous ions tar reverse ta habo je when 1 mole of the ionic substance is converted into corresponding gaseous ions convert hela pare jeti ke amount darkar padibo that is known as your lattice energy clear bujhi hela yes sir okay so heat capacity write down heat capacity is known as heat capacity ko hame koi pariba that the
ability of a system to absorb or emit heat is known as heat capacity, is known as heat capacity. ताहले हमें हीट कैपेसिटी जदि हम देखिबा मैथमेटिकली बा जिनसटा हीट कैपेसिटी एक्चुअली कौन हुए ना वी नो दैट हमें जानिछु जे वी नो हमें न जानथिले भी लिखिबा वी नो the heat transferred to a system, the heat transferred to a system, गोटे सिस्टम को हीट जी ट्रांसफर होता है, द हीट ट्रांसफर टू ए सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. कौन कहला बुझे आम मन सपोज गोटे जिनस कौन है 30 डिग्री थिला 50 डिग्री है 30 डिग्री थिला 50 डिग्री है 30 डिग्री थिला 60 डिग्री है मत कहीपर कौटी अधिका हिट देवाक पड़ो गोटे सिस्टम 30 डिग्री थिला 50 डिग्री करवा आउ जने 60 डिग्री करिवो कौटी अधिका हिट देवाक पड़ो कौटी अधिका हिट देवा पड़ो 50 डिग्री 30 रु 50 जो मैंने गूगल मीट रे अच्छो कह लेट मी नो जे 30 रु 50 है 30 रु 60 है कौटी अधिका हिट देवा पड़ो इवेन यूट्यूब रे भी जो मैंने अच्छो टेल मी 30 रु 50 है 30 रु 60 है कौटी अधिका हम सर 30 रु 60 30 रु 60 ऑब्वियसली गुड सरस्वती आउ की आंसर दीचंदी लेट मी नो आउ की आंसर दीचंदी हमरा टिके प्रोसेसिंग सर एंथैल्पी और एनर्जी भीतर कोन डिफरेंस अछि ना विष्णुप्रिया डिफरेंस किछि नाही एनर्जी और एंथैल्पी भीतर किछि डिफरेंस नाही सुस्त्री 50 डिग्री 30 रु 50 डिग्री 30 रु 60 डिग्री सो जब 60 डिग्री आछी अधिका हीट होची सेतबेले कौन होची सेटा तुमर कह जावा हीट कैपेसिटी जेतबेले अधिका हीट होची दैट इज नोन एज योर हीट कैपेसिटी इज मोर बा अधिका हीट देवा को पड़िवो जदि हमर टेम्परेचर अधिका बढ़ेबी 60 डिग्री करबी मु एटा लिखि दोची सपोज एटी 30 रु 50 थिला मते सपोज दरकार पड़ला हीट केते ना मते दरकार पड़ला 10 जूल सपोज मबे 30 रु 60 करबी ऑब्वियसली मते आउ टिके दरकार 15 जूल मु 30 रु बर्तन 70 करबी आउ 5 जूल 20 जूल दरकार पड़िवो सो टेम्परेचर जिते बढ़िबो सेते कोन हबो डेल्टी एडी डेल्टी केते हम जे देखिबा डेल्टी एडी तुमरो केते 20 हियर डेल्टी इज 30 हियर डेल्टी इज 40 सो डेल्टी जिते बढ़ुची डेल एच सेते इंक्रीज होची क्लियर बुझियला सो एच इज सर मैं 3 क्वेश्चन वेरी गुड भाग्यश्री क्लियर बुझियला समस्त को सो इडी हमें लिख परिबा दैट हीट कैपेसिटी हीट क्यू माने हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी ताले प्रोपोर्शनलिटी उठे देले कोन हम क्यू इज इक्वल टू C into del T. Q is equal to C into del T. And this C is known as your heat capacity. Let it be question number 1. This C is known as proportionality constant known as heat capacity where C is equal to proportionality constant. Yes.
Any doubt, Saraswati? Proportionality constant known as heat capacity. तो कौन कहबा हमें heat capacity कहबा. Clear? Is it clear? Heat capacity clear? क्लियर. तो आम जदि या करवा हिट कैपेसिटी को जदि आम डिफाइन करवा एटा आग केस रे आम डिफाइन करनथिले माने जनरली आम कहीदेले जेमिति हिट कैपेसिटी को आम डिफाइन करवा. डिफाइन कले कौन हम सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल टी. क्यू बाई डेल टी. अच्छा डेल टी जिते वन हो सी इज इक्वल टू कौन हम वन हम व्हेन डेल टी इज इक्वल टू वन जिते डेल टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन से और 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस जा 1 केल्विन ता इन डेल टी चेंज इन टेम्परेचर रे सेल्सियस और केल्विन समान बट टेम्परेचर रे नुह चेंज इन टेम्परेचर रे केमदी तुम कह केमदी सर ना T2 इज इक्वल टू सपोज यू टेक 30 डिग्री सेल्सियस एंड T1 इज 27 डिग्री 29 डिग्री सेल्सियस ताले यार केल्विन केते होची 30 माने 273 ऐड कले केते होची दिस इज 303 केल्विन and ADA केते आछी 302 केल्विन. सो एडी डिफरेंस आछी 1 केल्विन एडी भी डिफरेंस आछी 1 डिग्री सेल्सियस. सो डिफरेंस देखिला आडू को समान होची बट 1 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू 1 केल्विन. क्लियर. 1 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू 1 केल्विन. डिफरेंस रे समान रहिबो बट एक्चुअली नॉट समान. बुझी होची ना पॉइंट ना कार डाउट होची. डिड यू अंडरस्टैंड ना को माने बुझी पालनी गूगल मीट रू समस्त बुझी पाल ना कार डाउट रहा. ओके सुश्री ओके सरस्वती बढ़िया. लेट मी इरेज दिस. सो व्हेन डेल टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन देन सी इज इक्वल टू क्यू. ताले हमें सी को कौन करबा क्यू. सो फर्दर देन सी इज इक्वल टू क्यू हो जितले एटा 1 हो जो. सो वी कैन से that the amount of heat released or given to a system to raise the temperature by 1 degree Celsius. So 1 degree Celsius को temperature बढ़ेवा को जेतिकी heat दरकार that is known as heat capacity. So we can write here that it is quite important definition. Heat capacity of a system is defined as heat capacity of a system is defined as जो मानकर क्लास अच्छी जाओ पिला माने परे रेकॉर्डेड देखि नबो टिके स्पीड रे. heat capacity of a system is defined as the amount of बुझिएलानी सुश्री. अरे देखो डेल टी जितोले 1 हबो सी इज इक्वल टू क्यू ना बुझिएलानी. रिपीट कर दियो. again I am repeating del t जितोले 1 हबो c is equal to q हबो राइट हबो ना नहीं. when del t is equal to 1 c is equal to कौन हबो q by 1 माने q or not. बुझिएला बुझी पारलो कि नहीं सुश्री एंड सरस्वती. when माने जेतोला हमर डेल टी टा 1 डिग्री रहइबो 1 डिग्री सेल्सियस c इज इक्वल टू q by 1 माने q हबो राइट ना नहीं. प्लीज गिव रेस्पॉन्स दियो जेतोले डेल टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस बा 1 केल्विन हबो c इज इक्वल टू q by 1 इज इट और नॉट. सरस्वती प्लीज रेस्पॉन्ड करो. सुश्री डू रेस्पॉन्ड करो yes or no. Okay. So heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a system
to raise the temperature of a system. सर मुझे Okay, by 1 degree Celsius. So or 1 degree Kelvin, 1 Kelvin, 1 degree Celsius temperature बढ़ाइबा पई जेतिकी हीट दरकार सेटा होची हीट कैपेसिटी. क्लियर. सो गोटे सिस्टम रो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाइबा पई जेतिकी हीट दरकार दैट इज नोन एज इट्स हीट कैपेसिटी. इज इट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर. ये हला हीट कैपेसिटी. बट व्हाट अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी? जेतोला हमन कोन करबा ना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू the heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a system containing 1 mole only. Yes. Okay, ठीक अछि. सेमानकर क्लास अछि, so they should leave because they have the live class at the application also. माउटी के पढ़ेबी सीपीसीबी आउ तार रिलेशनशिप पढ़े की रखी देबी. ठीक अछि. बट आई हैव टू टीच दिस. याको म पढ़ेबी जेंते होला. So Saraswati, did you understand what definition about? Yes, sir. Okay. So it has heat capacity जेतोले 1 mole थिला 1 degree. अच्छा मु कहू what is molar heat capacity? ना जेतोले सिस्टम रे 1 mole ही थियो, right? So molar heat capacity we can write here that molar heat capacity, not simply heat capacity. Molar heat capacity, this is the definition of molar heat capacity. Molar heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a system containing 1 mole of a system containing 1 mole by 1 degree system Celsius. Ba आमे कहबा जे मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए 1 mole of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system, to raise the temperature of. Yes, sir. Defined as the amount of heat required to raise the temperature to the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance, 1 mole of a substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius. So एटी केवल ऐड हैला 1 mole substance, सेटी 1 mole नथिला एटी 1 mole ऐड हेगला, 1 mole हेगला एटा हिजबो molar heat capacity. Clear? This will become as molar heat capacity. किछि किछि बुक रे एटा सी जगह रे कोन रहिछि एस रहिछि. एछि किछि बुक रे एटा रहिछि सी जगह रे एस रहिछि. q is equal to ms delta theta del t रहिछि mc del t बा ms delta theta. किछि किछि जगह रे बुक रे एटा को लिखा हिछि. सो फर्दर एटा जदि हमें देखिबा जदि फर्दर एटा थिला हमरो q is equal to c into del t c थिला. ताहले हमें इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी जदि हम देखिबा ताहले टोटल q कोन हे परिबो एडा एडा हमन हला q is equal to c into del t. So
आम जदि इन टर्म्स ऑफ मास रे कहबा इन टर्म्स ऑफ मास रे कहबा एडा एडा तुमरो m एडा दिस इज c del t further c is equal to ms c is equal to ms what is ms m is equal to your सर आमे मोलर हीट कैपेसिटी को एमिति कहि परिबा कि जेतरो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आमे मोलर रे मतलब काउंट करबा मोल रे काउंट करबा for 1 mole बा specific heat calculated sorry हाँ specific heat calculated for 1 mole heat not specific heat it is heat capacity हमें heat capacity देखुचे ना heat capacity calculated for 1 mole okay further heat capacity is directly proportional to further heat capacity जो रही heat capacity is directly proportional to the heat capacity is directly proportional to the this is directly proportional to the your mass of the substance this is directly proportional to the mass of the substance ठीक अछि this is directly proportional to mass of the substance so you can write here एठी हमें कोन लिख परिबा that here you can write that c is directly proportional to m c is directly proportional to m and then c is equal to your ms c is directly proportional to ms what is s and equation 1 थिला परा right equation 1 थिला ना हाँ what is s s is your proportionality constant known as specific heat capacity ये थिला heat capacity basically specific heat capacity where s is equal to proportionality constant known as specific heat capacity यार भी डेफिनेशन हम देखिबा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रो डेफिनेशन कोन हबो आ यार रिलेटेड प्रॉब्लम हमें नेक्स्ट क्लास माने आसना कले करबा ठीक अछि सो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फर्दर पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 हमर एटा इक्वेशन 2 थिला इक्वेशन 1 रे पुट करबा इक्वेशन 1 रे पुट कले कोन आसीबो एनीवन सरस्वती आउ कि अछंदी कि anyone किया हुआ अच्छो की लाइन रे सरस्वती टेल मी व्हाट विल बी द आंसर putting equation 2 in equation 1 we get putting equation 2 in equation 1 we get equation 2 को equation 1 रे पुट करले कोन आस जीवो एटा तो तुम्हारा c is equal to ms थिला सो एटा c is equal to ms थिला c जगह रे कोन पके ms so q is equal to ms del t we get q is equal to ms del t okay और किछि किछि जगह रे तुमे पाइबो ms डेल्टा थीटा डेल्टा जगह रे डेल्टा थीटा भी किछि किछि जगह रे थिबो सर ओनली 2 स्टूडेंट्स ओके नो इशू मु नो आउ शुभश्री राउळ ठीक अछि किछि कथा नै अन्य माने देखि देबे अन्य पिला माने हमर जे अछंती खास करी मेट साइ रो से माने भी देखि देबे आ हमर जो पिला माने रहिचंती ओइ भी दे विल आल्सो वॉच द वीडियो इन लेटर क्लियर अबाउट दिस specific heat capacity
सो आम जदि ए देखा फर्दर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एवं डिफाइन करवा केमती करवा सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 3 S is equal to कौन आसिबो Q divided by m del theta right आसिबो ना सरस्वती सो कैन यू डिफाइन दिस तुम्हें डिफाइन कर परिबो कैन यू डिफाइन इट सरस्वती व्हाट इज S or specific heat capacity can you define this specific heat capacity can you define this No, sir. okay I will explain कौन हम देखो S when m is equal to 1 kg m is equal to 1 kg or 1 gram जेहेतु हमर m रो यूनिट कौन रहे केल्विन m ks by SI यूनिट रे kg 1 kg and del theta or del t is equal to 1 degree Celsius or 1 Kelvin से तो लाइक S is equal to कौन हम then S is equal to Q so you can define from this part that specific heat of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg substance गोटे kg substance रो 1 kg substance by 1 degree Celsius तो आम केते डिग्री 1 डिग्री कहीं ना डेल थीटा तुम 1 रहिबो आ 1 kg भी होबो सो 1 kg substance रो कौन रहिबो ना 1 kg substance रो 1 degree Celsius टेम्परेचर बढ़ेबा को जति की हीट दरकार दैट इज नोन एज योर specific heat clear Saraswati and Subhasri is it clear did you understand clear next हम जिबा CP and CB next is your CP what is CP and what is CB what is CP CP is your heat capacity at constant pressure heat capacity at constant pressure heat capacity at constant pressure Yes, sir. is known as your CP heat capacity at constant pressure is known as CP Yes, sir. Clear. okay Yes, sir. okay so so heat capacity at constant pressure heat capacity at constant pressure means your CP so CP माने कौन हमें define कर परिवा that heat capacity at constant pressure केमती आसीबो how can you define this now we know that H is equal to H what is the expression for H Saraswati can you tell me what is the expression for H H is equal to yes
H is equal to U plus PV ना, then del H is equal to कौन आसियो U del U plus PV. del U plus del into PV, del into PV माने कौन आसियो माने del U into PV कहले आमे दीटा एटा बुझी पड़िबो कौन गोटे को प्रथमे डेरिवेटिव करिवो आ गोटे Yes sir, कांस्टेंट ମୁଁ गोटे କହିଲି H is equal to U plus PV. ओके सो इट इज del PV plus P del V क्लियर माने कौन हला ना तुमरो Del U plus P del V. गुड सो एटा आसीबो del U plus del P V plus P del V ओके सो एटा आसीबो del P V plus P del V आसीबो del H is equal to del U plus del P V plus P del V हमर एटे कांस्टेंट प्रेशर रे प्रेशर टर्म डा कोन हो चेंज इन प्रेशर 0 एट कांस्टेंट प्रेशर del P is equal to 0 so you can write here that del H that is heat del H is equal to कौन होगा del U plus P del V del U plus P del V and this is actually your Q this is the Q बा एटा इन तुम्हारा actually CP this is your CP del H is equal to this is your CP so this is equal to your CP del H is equal to CP ताले okay so del H is equal to your CP right बुझेला CP is equal to ताले आसीबो del H that is your molar heat capacity at constant pressure heat capacity del H heat एटा heat टा at constant pressure clear बुझेला is it clear बा आमर एमती del PV आम जनरली जानिछु जे del PV तो रुहेन एक्चुअली इट इज P del V ओनली राइट एटा हमर P del V थिला कारण एट कांस्टेंट प्रेशर रे हमर वैल्यू P del V इवन हमर P del V ही इनिशियली निया हिथिला सो del H is equal to del U plus P del V let it correct एटा करेक्शन कर दियो so del P term ही रहिबोनी this is equal to your CP next आसीबो तुमरो CV heat capacity at constant volume heat capacity at constant volume heat capacity at constant volume रे कोन आसीबो at constant volume we know that again del H is equal to del U plus we know del H is equal to बुझिलानी del U plus P del V again at constant volume P del V is 0 Yes sir. del V is 0 del V term दा 0 is ताले further कौन आसियो that del H is equal to then del U आसियो and further del H at constant volume means what is this del H at constant volume means CV so CV is equal to del U ताले del U सबोले कौन होगा CV और del and your del H सबोले CP okay so CP माने सबोले del H आसिबो CV माने सबोले del U होबो next is your relationship between CP and CV this is the last part of this lecture आजर क्लास रे एटा लास्ट पार्ट रहइबो नेक्स्ट क्लास रे हम केवल प्रॉब्लम ही करबा थर्मोडायनामिक्स को बेस करी रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV या फिर सपोज आउ गोटे पढ़ी देबा जीरो लॉ फर्स्ट लॉ पढ़ देबा जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पढ़ देबा तापर एंट्रोपी पढ़ देबा पढ़ी देला पर लास्ट को प्रॉब्लम गोटे गोटे करि करि जिबा
प्रॉब्लम पूरा सीरियली गोटे थरे करिजुवा सेमती करिवा भल हबो फर्दर we know आमे जानू we know कौन that del h is equal to del u plus p del v further आमे p d v रो वैल्यू आमे बाहर करथले तळ दिन del u plus del n r t तळ दिन एटा सॉल्व करथिले so we can write here that for ideal gas आमे लास्ट देखिथिले एटा ideal gas में कौन हबो p del v is equal to del n r t so del h is equal to your del u plus del n r t for 1 mole जेहेतु हमें 1 mole ପାଇଁ बेसिकली CpCv टा 1 mole ପାଇଁ ना for 1 mole of gas 1 mole gas del n is equal to 1 del n 1 रहिबो so we can write here that एटा कोन लिख परिबा that del h is equal to del u plus del rt del h is equal to del u plus del rt del n तो 1 रहिबो del rt r गोटे कांस्टेंट so del u plus r del t it becomes as del u plus r del t del h is equal to del u plus r del t okay so आमे del h जगह रे del h माने हमें जानचे this is equal to ओहो गोटे भूल हो गला एक्चुअली दिस इज del h माने होती तुम्हारा del h into this is not cp sorry this is not cp sorry actually this is not cp del h multiplied by dt माने तुम्हारा del h सहित टेम्परेचर मल्टीप्लाई हेले this is cp so cp is equal to actually del h by del t होबो सर प्लीज टिके आउ थरे रिपीट कर देबे आज रो क्लास टा लास्ट को कहि देबे हां ठीक अछि लास्ट को कहि देबे आ एटे टिके भूल हे गेला del h is equal to एटा हबो cp del t भूल हे गेला सॉरी फॉर दिस del h is तुम्हारो cp del t मोर भूल हे गेला जे I told that actually cp is equal to del h by del t माने change in enthalpy by time that is your q cp is equal to q so del h by del t होबो आमे ऑलरेडी एठे देखिथिले दैट c is equal to your formula आंसर देखिथिले q by del t c is equal to q by del t राइट एटे q जगह रे हमें कोन पकेबा q जगह रे हमर पडिबो del h c is equal to ताले आसीबो del h by del t okay c is equal to del h by del t so cp is equal to del h by del t or del h is equal to cp del t and here is again there is also it गोटे भूल हो जाइए प्लीज करेक्ट दिस सॉरी अगेन फॉर दिस इश्यू del h v जो तो हले तुमरो del h v is equal to del u एठी भी तुमरो आसीबो कोन del h by del t is equal to कोन आसीबो this is equal to cv del h by del t at constant volume is equal to cv which is equal to del u into del u ताले del u is equal to कोन आसीबो cv into del t एटा गोटे भूल हो जाइथिला again please correct this so cp is equal to del h by del t and del h is equal to cp del t further cv is equal to del h by del t at constant volume that is del u by del t sorry del u by del t ताले del u कोन हबो del u दा del t दा एपड को मल्टीप्लाई हे जिवो मल्टीप्लाई हेले del u becomes as cv del t del u दा cv से तो मल्टीप्लाई हेले cv del t हे जिवो हला ताले एठे del u प्लस बाकी सब ठीक ठाक अछि so del h plus del h is equal to del u plus r del t एठे हमें आ गोटे जिंस ऐड कर दवा मल्टीप्लाइंग
सॉरी del h रो वैल्यू आमे जो देखिबा del h रो वैल्यू लेट इट बी इक्वेशन नंबर हमरो को जे देथिला 3 let it be equation number 4 let it be equation number 5 so by putting equation number 4 and 5 we get तो del h जगह हम वैल्यू पुट कर देबा del h जगह कौन पुट करबा del h जगह हम पढ़िबा cp del t राइट cp del t so इटा हिजबा हमरो cp del t is equal to this is cv del t plus r del t and this is your del h out del u এটা by using equation 4 and 5 4 5 use है ना yes by using equation 4 and 5 4 5 इक्वेशन को यूज कले ताले del t जदि हमें कॉमन बाहर कर देबा कोन आसीबो cp multiplied by del t is equal to एठी हमें del t कॉमन कर ले cv plus r into del t so del t cancel out del t will be cancelled out and ultimately you will get that cp is equal to cv plus r cp is equal to cv plus r or cp minus cv is equal to r clear so this is the final answer that is the relationship between cp and cv relationship between cp and cv is equal to cp minus cv is equal to r so this is equation number 6 relationship between cp and cv equation 6 represents the relationship between cp and cv so it is all about your enthalpy as well as heat content एडी एंथैल्पी और हीट कंटेंट एडी सरी गला नेक्स्ट क्लास रे हम देखबा लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जीरो लॉ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ठीक अछि जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हमरो दरकार ही नाही तो हम टिके देखि देबा कोन पढिले आजिरो क्लास रे हम जो देखबा 5th नंबर थिला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी माने सॉरी एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो पढिथिले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी माने गोटे बॉन्ड ब्रेक करबा को केति की एनर्जी दरकार फर्दर लैटिस एनर्जी माने ionic gaseous molecules ionic gaseous substance रो ionic substance तुम्हारो prepare हो solid substance ionic compound prepare हो ionic gaseous substance रो से समय रे जहाँ energy release हो that is known as your lattice energy ताको हमें कहबा lattice energy okay से जिंस को हमें कहबा lattice energy enthalpy of solution कोन थिला ना हमें गोटे सब्सटेंस को हमें डिसॉल्व करिबा सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करके हमें सॉल्यूशन बनेबा दिस इज नोन एज योर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ताको हमें कहबा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हला फर्दर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन द फार्मूला हबो दैट लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी and enthalpy of dilution जदि हम देखिबा enthalpy of dilution 10 moles of water 40 moles of water जेतोले हमें excess of amount of water add करिबा सेतोले जहा एनर्जी रिलीज हो that is known as enthalpy of dilution heat capacity होची कोन heat capacity is q is equal to c del t so heat capacity को हम जदि डिफाइन करिबा that the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree celsius ताले molar heat capacity now it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree celsius ठीक अछि and further हम देखथिले c is equal to ms what is s is your specific heat constant and heat capacity and this is can be also defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree celsius then at constant pressure cp is equal to del h by del t hobo so del h is equal to cp del t further at constant volume cv is equal to your del u by del t so del u is equal to cv del t further relationship between cp and cv you will find that cp minus cv is equal to r it was all about the gist of today's class in the next class we will discuss about the laws of thermodynamics I hope you all should have
you would have enjoyed this class. Thank you for watching the class. Thank you again.